Welcome everyone. I am Professor KV Kushare, lecturer in Mechanical Engineering Department from MAP's Rajashree Shahu Maharaj Polytechnic, Nasik. Okay, we discussing last lecture the different types of budgets. We discussed the material budget, manpower budget. The manpower plans define the number, skill set, and time frame for the human resource requirement. It addresses both the maintenance and growth of the existing employee numbers. The manpower planning will be strategic function with the objective and goals in line with the corporate strategic objective. Then determining future manpower requirement. Future manpower requirement are the determined by matching existing human resource against projected value and types of work and developing existing staff and requiring new staff to cater to those needs and develop the most effective mix of core and support staff. The requirement should be approved by HR मैनेजर एंड कम्युनिकेट टू द HR ऑफिसर इजीली. जो भी मैन पावर की ज़रूरत रहेगी कंपनी में, सपोज 100 मैन पावर की ज़रूरत, जो भी प्रोडक्शन रहेगा उसका प्रोडक्शन के लिए 100 वर्कर चाहिए, बट जो 90 वर्कर में ही हम काम कर रहे हैं, दैट टाइम द रिक्वायरमेंट ऑफ 10 वर्कर्स. एंड जो 10 वर्कर रिक्वायरमेंट रहेगा वो HR रहेगा, उससे कम्युनिकेट करके वो requirement fill करनी है. The budget for the manpower requirement. Manpower is the important function that impact every employee in organization and that has a cost. The budgeting for manpower requirement refer to the fund that HR allocated to the HR process. Enterprising the HR budget will be including fund allocated to the hiring, salary, benefit, talent management, training, succession planning, workforce engagement and employee well-being planning. जब रिक्वायरमेंट रहेगी, स्किल वर्कर कंपनी में रिक्वायर्ड भी रहेगा तो उसको जो सैलरी रहेगी उसकी कैस्ट रहेगी तो HR को अलोकेट करनी होती है. और न्यू कमर्स रहेगा तो उसके ऊपर कुछ दिन के लिए जो भी खर्चा होगा, जो भी उसको सैलरी देनी होगी, लाइक फंड रहेगा तो हेयरिंग रहेगा, उसकी सैलरी रहेगी, उसका बेनिफिट कंपनी को ऑर्गेनाइज कितना होएगा, उसके पास उस प्रोडक्ट के लिए टैलेंट कितना है, उसकी ट्रेनिंग के लिए जो टाइम देगा उसकी जो सैलरी रहेगी. And that is the employee well-being planning. HR budget are used financial information, performing result and historical data from every department. Since the HR budget consider HR activity company wide, it is any incredible complex essential document to determine a company future HR activities. The information in the HR budget including but it's limited to. There are given some information of the budget: forecast on number of employees, employees turnover rate, salary data, requirement budget, new benefit program, training and development, payroll cost, overtime, incentive compensation, strategic प्लानिंग और HR डेटाबेस. जो भी वर्कर आएगा उसके ऊपर सैलरी कितनी देनी होगी, कितने वर्कर कंपनी को लगेंगे, उसका टर्नओवर कितना जाएगा, हम जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कितना प्रॉफिट हो रहा है, ये वर्कर लेके उसके बाद कितना होगा, उन जो वर्कर हमने रिक्वायरमेंट की है उसके बाद हमारा प्रोडक्शन कितना बढ़ेगा, उसको सैलरी कितनी देनी पड़ेगी, रिक्वायरमेंट बजट्स के हिसाब से जो प्रोग्राम रहेगा उसके ऊपर उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, उनकी डेवलपमेंट करनी पड़ेगी. दैट द पेरोल कॉस्ट रहेगी, वो ओवर टाइम करेंगे तो ओवर टाइम को उनको कितना पैसा पे करना होगा. दैट इज़ द ऑल द बजट. The manpower budget is developed from the production budget. Is allow the company to know in the advance possible labor requirement based on production budget. Effect of ignoring manpower budget are labor shortage, hire worker at higher salary, lay off worker at work times, insecurity, low morale among workers. उसके ऊपर से इफेक्ट क्या होता है, जो लेबर शॉर्टेज क्रिएट होता है, जो स्किल वर्कर चाहिए वो मिलता नहीं, मिल जाता है तो उसको हायर सैलरी देनी पड़ती है. दैट इज़ हायर वर्कर टू हायर सैलरी. हाउ टू प्रिपेयर मैन पावर बजट. रिकॉर्ड प्रोजेक्टेड यूनिट टू बी प्रोड्यूस फ्रॉम प्रोडक्शन बजट, मल्टीप्लाई बाय द लेबर कॉस्ट पर यूनिट टू कैलकुलेट द टोटल लेबर कॉस्ट. The format of manpower budget, they are given the unit of products A and manpower cost per unit B. Like given a January 1000, manpower cost per 2, and total cost is a 2000. Again February 900, 2.5 per unit cost manpower. Then March also given, that is a different types of given. First one total cost is given January, जो जनवरी में दी है टोटल कॉस्ट 2000 दी है, उसके बाद 2250
बाद में 1650. दैट इज़ अ वेरिएशन ऑफ द टोटल कॉस्ट. वी कैन नॉट अपॉइंट अ नंबर ऑफ वर्कर बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस इन पर्टिकुलर मंथ. सपोज इफ एनी वर्कर produce average 100 units of job per month and the demand of for 1 month is 1000 taken, we will need to 10 worker to complete that the work. That is our requirement. It will be also help supervisor to make a job description in regards to completing that particular work. Then organization at supervisory level. Organizing the physical resource. Organize is the function of management which is the follow after planning. Once person have plans, they should organize the necessary resource for the accomplishment of desired goal. Any organization in the synchronization of available resource take place. These resources can be physical resource, human resource, financial resource, information resource, organization resource. The organization these resources properly and enhance productivity in the organization. Organization refer to the relationship between people's work and resource used to achieve the unique organization goal or objective. Then, according to Chistel Barnett's, organization means a person is able to define the role of position, the job related to the role of position, the coordination between authority and responsibility. Organization is the process of identifying and grouping the work to be performed, defining and delegating the authority responsibility, and establishing a relation from the purpose of motivating worker to work most effectively together while achieving the organization goal objective. इसमें क्या बताया, जो ऑब्जेक्टिव रहे, जो वर्कर के जो इशू रहेंगे, जो वर्कर की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करके जो भी वर्कर रहेगा उसको मोटिवेट करके जो टारगेट होगा तो टारगेट कंप्लीट करके जो कंपनी की ग्रोथ होगी, जो कंपनी का प्रोडक्ट होगा वो हाउ टू इंक्रीज एंड हाउ टू इस्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशन objective. In short, we can say that the organization is the process of arranging resource, allocating the work authority, and allocating the available resource among the members of any organization to achieve the organization goal. Organization establish relation between people and work resource. The organization at supervisory level can be in the form of, first one is a developing job description, deciding tasks, defining responsibility of worker with the specific skill set needed to complete the task, fixing located or fixing location of equipment, collecting data for developing of budget, arrangement of workstation and storage area, resolving conflict among the subordinate. Effective organization depend upon the several important concepts like specialization of the worker, chain of command, authority, delegation of authority, supervisor, span of control, level of centralization versus decentralization in the organization. That is the method we how to organization work at a supervisory level. Importance of organization is establish a pattern of relationship by giving duties and responsibility to the individual and group. It's help to achieve the organizational goal by facilitating good administration. It's help for optimum use of resource like man, machinery or material. It's provide adequate communication. It's help in effective use of available manpower. It's help to initiative growth and diversification. It's help in a good human treatment of employees. It stimulate creativity among workers. It's help to minimize the wastage, confusion, corruption and inefficiencies. That is the importance of the organization. Then roles of supervisor while organization of physical roles. So they are given some point. We discuss one by one. Organization of physical resource is a very important activity. For this work is required to be divided among workers so that they can perform a specialized portion. Next is the supervisor have to right to give order like authority. They are also liable to expect responsibility for the whether the work is done correctly. मीन्स क्या बताए, जो अथॉरिटी मीन्स जो सुपरवाइजर है उसको अथॉरिटी देगी, जो भी वर्कर वर्क कर रहा है उस टाइम उसको प्रॉब्लम क्रिएट हुआ, उसने टारगेट कंप्लीट नहीं दिया, दैट टाइम सुपरवाइजर गिवन इंस्ट्रक्शन टू द वर्कर. सुपरवाइजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एग्जैक्टिंग डिसिप्लिन अमंग वर्कर. जो वर्कर रहेगा प्रोडक्शन लाइन की ओर उसके वर्कर रहे उन्होंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, उन्होंने क्वालिटी अच्छी नहीं दी, टारगेट कंप्लीट नहीं दिया, उसको सब रिस्पॉन्सिबल जो सुपरवाइज़र रहेगा उसका जो रहेगा जो रिस्पॉन्सिबल तो सुपरवाइज़र रहेगा. देन सुपरवाइजर आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग मॉरल अमंग वर्कर. सुपरवाइजर मस्ट ऑफर लॉयल्टी एंड कोऑपरेशन टुवर्ड्स वर्कर while organization resource. Then
order and instruction shall follow down throughout chain of command from the higher manager to the supervisor. Formal communication and complaint are to move upward in the same channel. जो भी वर्कर रहेगा उनको कुछ इंस्ट्रक्शन आएगी कि क्वालिटी बेटर आनी चाहिए, वो डिसिप्लिन वो मेंटेन रखना चाहिए. जो भी आपका मैनेजर रहेगा, टॉप लेवल मैनेजमेंट रहेगा, उधर से सुपरवाइज़र को इंस्ट्रक्शन आएगी. जो भी वर्कर रहेगा वो अच्छे से काम नहीं कर रहा है, उसकी क्वालिटी नहीं आ रही, वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर रहा है, तो सुपरवाइज़र जो वर्कर रहेगा उसको इंस्ट्रक्शन देगा. दैट इज़ द साइकिल, साइकिल एंड चेन ऑफ कमांड. एम्प्लॉय आर टू बी द ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली. Supervisor shall encourage initiative among the worker. That is the roles or supervisor while organizing the physical resources. Okay, thank you.